फोटो बोलो इंट्रोडक्शन। अच्छा सर, इंट्रोडक्शन। हमारा नाम प्रमथ नाथ है। आधे से ज़्यादा लोग पहचान नहीं पाएंगे कि हम कुलश हैं। नाथ से ही हमेशा चले आए हैं और हम आज बैप्टिज्म हुआ आज पहली बार ये ऑफिशियली आई एम अ कुलश नाउ। I work at St. Chris and Temple Hospital as a pediatrician, and I've been in US since '96. Now I am based in suburbs of Philadelphia, enjoying the life there for last 7 years. So pretty good life. I'm Anuja, Pramath's wife, and I work in a bank as branch operations supervisor. And like he said, that we have been here since 1996 and liking it. I'm Bertha. I'm 15. I was born in New Jersey, but now I've been living in the suburbs of Philly for 7 years. Hi everyone, I'm Vidhu Nath. Vidhu Nath Kulsh now. I'm a junior in Boston University studying astronomy and computer science. Cool. So you want to go with the tip? Okay, I'll start with the tips and then we'll do our presentation. My tip is that as I'm getting old, and every year I do that, I give the thing that is more relevant for me, and like we discussed last time about retirement and this and that. But this year I would suggest to anybody who's 40 plus that we should strongly think and consider about making wills and power of attorney. Wills are of different kind. Living will, power of attorney is different kind, financial and health related. Those things are important. We don't pay so much attention if we are living in India because everything is local, and our personal touch will decide what goes. But here it can be a big headache both financially and everything if we don't have a proper living will. It takes hardly a couple of hours to go to attorney. It doesn't cost too much, but it is a document that will last forever. Obviously, you can update it whenever you like, but it's one thing that 40 plus should consider about. एंड रिसेंटली अभी हम लोग को ओकेजन अवेलेबल हुआ हम लोग के लिए कि एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट वाज नीडिंग अ होम टू स्टे फॉर 10 days एंड वी ऑप्टेड थैंक्स टू वर्धा because she was taking French, so we invited a foreign exchange student for 10 days at our home. It was very awesome experience, I would say. It was great, and I would suggest that anybody who gets an option, खासतौर से छोटे बच्चे अगर कोई लैंग्वेज ले रहे हैं और स्कूल में वो ऑप्शन है तो I would say कि definitely go for it. It's such a cultural eye opener for all of us. How a 14-year-old stayed for 10 days with us, and we had such a good learning experience for ourselves. So just go for it if you get an opportunity. Thank you. And my tip, for the past 6 months or so, I've been part of my town's Police Explorers program. And basically it's a program where teens do and learn how to do police stuff and volunteer at community events and everything. So one of the things that I picked up from there is that, if you're at a busy street and you're waiting to cross, instead of just, trying to figure out a good time to cross the street, if you press the crosswalk button, it actually gives you an extra 20 to 30 seconds to cross. So if you have a little kid or something with you and you need that extra security, it's just a good thing to remember. My tip is that most of us, we kind of live within the vicinity of either Philadelphia or New York, depending on where we work. And for me, I'm based in Boston, and as a student, I always would go to different events which took me to the main attractions in those cities, which is kind of what we do when we first move. For example, when we first moved to Philadelphia, we got a chance to only see the really famous things like the Liberty Bell or the Museum of Arts over there and everything. But we didn't get to see any of the small things which kind of make the city different from other cities. So one thing I picked up in Boston is that on any given day, on a good day, hopefully when it's warm, very nice outside,
just kind of going to a central location in the city and walking around and just getting a good feel for how everything, like what sort of little in-the-wall shops or restaurants there are, what sort of cool museums may be off in the corner. That kind of gives you a better idea of what city you're living in and how you can sometimes entertain people when they come over. So for me, I walked around a lot during the summer and in Boston. And there were so many different parts of the city that people already know. For instance, the Boston Commons or the Boston Harbor where like the Tea Party is, or the Museum of Fine Arts, the MFA. That's where everyone goes to. But for me, when I was walking around, I found different parks, different locations as well. For instance, there's this string of parks, I guess is the best way to put it. Just like a lot of different parks connected, which are called the Emerald Necklace, because on a map, they look like a giant emerald necklace. And they end in this place called the Arboretum, which has a fantastic view of the entire city on top of this hill. So, but no one really knows about that. You don't think Boston Emerald Necklace, you think Boston Tea Party, whatever. Quincy Market, Faneuil Hall. So I think that's one thing that with our own, whatever cities we're closest to, is a good way of learning or becoming like a citizen of that city. The keys on a warm day, right, in Boston. Yeah, the warm day. Right? It's only 3 days It's already a year, right? 20 below there Only now. 3 days a year. Yeah. It's always cold over there. पर आइए आज आप लोग को इंडिया लेके चलते हैं जहाँ पे सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल को इंडिया का पीएम बनाने के लिए बहुत ईगर हैं और नमो यानी नरेंद्र मोदी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्गर पब्लिक सपोर्ट के कारण और के कंपैरिजन में इनफैक्ट रागा यानी राहुल गांधी की वीक परफॉर्मेंस और लैक ऑफ एक्सपीरियंस को कवर करने के लिए उन्होंने अपने रूटीन एडवाइस ग्रुप में से हटा के 2 सीनियर लीडर्स को इनवाइट किया है, लालू यादव और मुलायम सिंह, जो कि रागा को टिप्स देंगे पीएम बनने के लिए। कूल। मम्मी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। बेटा मैं ये बात 50 मिलियन टाइम्स सुन चुकी हूँ। माँ होने के नाते मैं भी तुम्हें इंडिया का पीएम बनाना चाहती हूँ, पर परेशान हूँ कि इस नया प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल किया जाए। प्रॉब्लम तो वो दाढ़ी वाला है। जैसे ही मैं पीएम बनूंगा, सबसे पहले उसे क्लीन शेविंग करूंगा। हाँ, और उसकी सब स्पीचेस बैन करूंगा। बेटे ये डेमोक्रेसी है, ओपनली ये नहीं कर सकती है। फॉर नाउ मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग लीडर प्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंट हेल्प दी है। दैट्स व्हाई मैंने लल्लू और मल्ला को बुलाया है। सही बोला है। एक राहुल बा बहुत परेशान नजर आते हो। लालू आ गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 200% वोट दिलवाऊंगा तो मैं इस इलेक्शन में। 100% सबने सुना है, लालू गारंटी देता है। 200% का इजाद करूंगा। कैसे? तो मैं मालूम है शून्य का आविष्कार किसने किया, हम बताता है। लाल कृष्ण आडवाणी आर्यभट्ट के पास पहुंचे, पूछा महाप्रभु मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के क्या चांसेस हैं? आर्यभट्ट बोला शून्य। तब से शून्य का आविष्कार हुआ है। हम तुम्हारे लिए 200% का आविष्कार कराएंगे। लल्लू जी कुछ सजेस्ट करो, राहुल में क्या कमी है? क्या कमी है? खाया पिया नहीं नजर आता है, बिल्कुल ढीली ढाली बॉडी है। अरे सोनिया जी, घर के पीछे तबेला लगाओ, गाय भैंस बांधो, रोज सुबह सुबह ताजा दूध और मक्खन खिलाओ, वर्जिश कराओ। ऋतिक और रणवीर जैसी बॉडी दिखेगी तो भारत की 50% जनता यानी कि महिलाएं का 100% वोट पूरा बैठे बैठे मिल जाएगा। मम्मी मेरे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम कहाँ है? 10 बजे उठने के बाद 7 बजे तक तो सो नहीं पाता हूँ। कंफ्यूजन तो बहुत लोगों को होता है। परसों की बात सुन लो, मायावती अपने हाथी को लेके आए, उनका चुनाव चिन्ह हाथी है ना, हाथी लेके आए। हमने पूछा ये भैंसिया को लेके काहे आए हो? कहते हैं लालू जी दिखता नहीं है तो हाथी है। हमने कहा अरे मायावती मैं तुमसे थोड़ी, मैं तो हाथी से है।
बात नहीं तो दूसरी तरह से सोचो। भारत में महंगाई कितनी बढ़ गई है, उसका इशू छू मंतर करना पड़ेगा। प्याज 100 रुपये किलो है, गरीब आदमी कैसे लेगा? अरे भैया राहुल, हाथ ऊपर उठा उठा के बाएं खींच खींच के जनता में ऐलान करो, प्याज स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है। किसी भी भोजन में प्रयोग करना मौत को बुलावा देना है। जब लोग प्याज नहीं खाएंगे, दाम कम होंगे, लोग अमीर हो जाएंगे। तुम्हें ये तो मालूम है जैन लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? क्यों? प्याज नहीं खाते ना। तो जब लोग अमीर होंगे, भारत की 50% जनता जो गरीब है उसके 100% वोट तुम्हें मिल जाएंगे। न साली प्याज होगी, न ससुरी महंगाई, और गरीब जनता में तुम्हारी होगी वाही वाही। पर मम्मी, मैंने बिना प्याज का बटर चिकन कैसे खाऊंगा? वो तो आम जनता के लिए बोला है, तुम्हारे जैसे शहजादों के लिए थोड़ी है। मेरा बटर चिकन बच करे। मुलायम जी, आप क्यों चुप है? आप भी अपनी राय बताइए। सोनिया जी, हमारी सुनिए। हम कहा हैं सारे ऊंची ऊंची पोस्टें अपने पहचान वाले लोगों को बैठा दिए। इटालियन माफिया आप तो सबको जानते होंगे, उन सबको बुला के सब ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठा दिए। जो कुछ जगह हो, प्रियंका और जमाई बाबू को बुलाकर बैठा दिया। इलेक्शन वाले दिन सबको मार पीट के सारे वोट राहुल के होंगे। उन सब के पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। अरे तो दूसरी बात सुनिए। सारे देश में जगह जगह दंगे लड़ा, बहुत फायदा होगा राहुल को दंगे होने से। जादू भैया, दंगों से राहुल बाबू को कैसे फायदा होगा? बता दंगे तो हमारे घर होंगे ना। जैसे ही दंगे होने के बाद सारा आरोप अपोजिशन को मिल जाएगा, तो हम अपने परिवार अपने अफसरों से कह के दंगे रुकवा देंगे। दंगे रुक गए, आरोप अपोजिशन को, राहुल हीरो, फिर इलेक्शन में कौन रोके? आप दोनों को थैंक यू। राहुल वैसे ही इतना परेशान है, उसे और हेडेक नहीं देते। जाओ बेटा, 7 PM हो गया।